Hi friends, today we'll discussion about language. Language means if we want to talk with other persons, then we require a particular language. Means just like as we talk with other persons with Odia language and English language and Hindi language also. So language is a medium of communication. Communication means what? We interact with other persons by using a language, that is called communication. We interact with other persons. The language is a medium by which we can communicate with other persons, that is language. It is called general language. Different language like as Odia language, English language and Hindi language, just like as computer language. So here we will discuss about computer language. So when we want to interact with computer, at that moment we require a particular language, that is called computer language. A user can interact with a computer by using computer language. So different we interact with a lot of languages, the C language, C++ language and B language. Other languages are there, Java, Python, program. These are also a high level language. Computer languages are broadly classified into two types: low level language and high level language. So low level language means machine level language in a primary time period. And that means the first generation or second generation. These are the time of low level language. Basic language, Pascal language, these are the examples of that language, low level language. And another one is high level language. High level language means Java language, Python language. These are the examples of high level language. Low level language has certain limitations. Obviously माने low level language तार किसी limitation रहिबो, जेहेतु फास्ट जनरेशन सेटा माने डिस्कवर हेतिला जोडा हमर लो लेवल लैंग्वेज मेसिन कोड जोडा हमर लो लेवल लैंग्वेज रो मेन पार्ट होचे हमर मेसिन कोड यूज करा होतला जोडा हमर बतन मध्ये मेसिन कोड तो निहाते दरकार जिनि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मेशिनरी कोड, दैट इज 0 and 1, that are also called binary code. Therefore high level language have been developed. So first of all low level language, after that there is a requirement of high level language which is more developed than the low level language. They provide a comfortable platform for the users to understand and design programming logic. We know that एबे जिनि गोटे वर्सन गोटे चलथिबो माने कंप्यूटर कि मोबाइल फोन ताले गोटे ईयर वाइज ईयर तार आउ गोटे कौन न्यू वर्सन आसुचे बा न्यूली डेभलप्ड वर्सन सेटा आसुचे सेमती प्रथम जो लैंग्वेज यूज करा जोड़ा लो लेवल लैंग्वेज तापर आउ टिके डेभलप्ड जोड़ा कौन हाई लेवल लैंग्वेज. द हाई लेवल लैंग्वेज आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स: प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज and object oriented language. Procedure oriented language and object oriented language. So it is our language. What is language? So it is the medium of communication by which we can interact with other person, that is the general way of the language. And what is computer language? When a user can interact with a computer by using a language, that is called computer language. The computer understand only 0 and 1 language. 0 and 1, that is machine level language. machine level language that जोड़ा हमर फाइनल पार्ट टा होची माने जो टारगेट कोड टा सेटा होची मशीन कोड. जिन हमें पाइथन पढ़िबा न जावा पढ़िबा जोड़ा हमर लास्ट हम जो माने रीच करबा सेटा होची हमर मशीन लेवल लैंग्वेज रे कन्वर्ट होबो, जोटा कि हमर स्टार्टिंग रे जो कोड थिला दैट इज कन्वर्टेड. इट्स रिक्वायर्ड that language, that codes are converted into machine codes and computer understand only the binary code 0 and 1. So this is the part of language. So now we will discuss about compiler and interpreter. So already we know about the what is language. Means computer understand only the machine language, that is called 0 and 1. when ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯେମିତି he or she does not understand the Hindi language. At that time a translator is required to convert the Hindi language. Means
it required that the Hindi language to convert into the English language. That's why computer level also the programming language, a translators are required in the part of high level language, means Java, Python programming, and these are the high level languages. In these languages, translators are required in the time of program checking, debugging and program running. Compiler and interpreters are required. These are the translator programming parts. So what is compiler? Now we will discuss about difference between compiler and interpreter. Compiler takes the entire program at once as input. कंप्यूटर कौन कर पूरा प्रोग्राम को पैराग्राफ वाइज ताको एट ए टाइम चेक कर इंटरप्रेटर कौन कर ना लाइन बाय लाइन चेक कर जिन मोस्टली एग्जांपल आर पाइथन प्रोग्राम रे से लाइन बाय लाइन चेक कर पाइथन प्रोग्रामिंग दैट्स वाई द रिजल्ट इज बेटर जोड़ा शो कर कौन पाइथन प्रोग्राम रे जेहेतु इंटरप्रेटर यूज करा लाइन बाय लाइन से कोड चेक करा तो कंपाइलर स्पीड हाई हम जेहेतु से एट ए टाइम चेक कर रन कर इंटरप्रेटर लो हम जेहेतु स्पीडटा स्लो हम कहीं से लाइन बाय लाइन चेक कर इट जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर जेहेतु पैराग्राफ एट ए टाइम से कन्वर्ट कर माने कोड रे चेंज कर तेणुक गोटे इंटरमीडिएट कोड गोटे जनरेट कर मेमोरी रिक्वायरमेंट आर हाई हम किंतु ये जेहेतु लाइन बाय लाइन चेक कर इंटरप्रेटर तेणुक मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस नो इंटरमीडिएट कोड क्रिएट एथिरे इंटरमीडिएट मझे किसी कोड किसी आसो ना इन दिस कंपाइलर पार्ट ऑल एरर्स आर डिस्प्ले टुगेदर सबू जा एरर माने एट ए टाइम शो कर ये एरर अच्छी ए लाइन रे एरर अच्छी किंतु ये लाइन वाइज लाइन एरर चेक कर कंटिन्यूस ट्रांसलेटिंग द प्रोग्रामिंग मैंने लाइन बाय लाइन चेक कर अंटिल द फास्ट एरर इज मेट इन व्हिच द केस इज इट स्टॉप्स गोटे लाइन रे से चेक कर फास्ट से एरर देखला से स्टॉप हो से माने करेक्शन कराब सेकेंड लाइन चेक कर एमती गोटे लाइन चेक कर तो एरर डिटेक्शन इज डिफिकल्ट पैराग्राफ जो चेक कराब से एरर डिटेक्शन डिफिकल्ट हम बट लाइन बाय लाइन रे एरर डिटेक्शन इजी हम 6 नंबर पॉइंट कंपाइलर लार्जर इन साइज बट इंटरप्रेटर इज स्मॉलर इन साइज कंपाइलर जोड़ा आम प्रोग्रामिंग एट ए टाइम जो चेक होची सेटा होची आमर C++ in these languages compiler are used because compiler check the whole program at a time and Python program Ruby Perl in these languages are interpreter is used because interpreter is a programming translator that is that checks line by line in these languages. These are the phases of compiler. कंपाइलर माने जोड़ा आमर हाई लेवल लैंग्वेज अच्छी HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज जहाँ सोर्स कोड कहवा सोर्स कोड दैट मीन्स लोअर पार्ट आमर अच्छी LLL मीन्स लो लेवल लैंग्वेज दैट इज मशीन कोड तो हाई लेवल लैंग्वेज जोड़ा आमर सोर्स कोड अच्छी दीज सोर्स कोड तो यहाँ हूँ आमर मशीन कोड से कन्वर्ट हम तो सोर्स कोड रो मशीन कोड रे कन्वर्ट केमी होची सेटा गोटे गोटे फेज दे जाउची कंपाइलर तो फास्ट फेज हूँ आमर लेक्सिकल एनालाइजर जोड़ी से गोटे टूल यूज हो जार ना हूँ लेक्स टूल एथिरे किसी टोकेन यूज करा होची जोड़ा कि आमर कन्वर्ट करने कन्वर्सन करने जो पार्ट ताको टोकेन्स आर द पार्ट्स व्हिच इज यूज टू कन्वर्ट फर्स्ट पार्ट इज लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट फेज सेकेंड फेज इज सिंटैक्स एनालाइजर थर्ड फेज इज सिमेंटिक एनालाइजर फोर्थ फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आम पैराग्राफ रे आम पढ़ते माने डिफरेंस पढ़ते जे इट रिक्वायर्स ए इंटरमीडिएट कोड जनरेटर नाउ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इज द फोर्थ फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन phases of compiler that means after that code optimization and target code generator finally assembly code or machine code is convert hobo in the whole phases of compiler मैनेजिंग सिस्टम जोड़ा आसवा आमर सिंबल टेबल मैनेजर ये कौन गोटे कंट्रोल करिवो ऑल फेजेस रे गोटे कंट्रोल करिवो तो फास्ट 4 पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रंट एंड ताको कहया फ्रंट एंड बोली लास्ट 2 पार्ट्स इज कॉल्ड बैक एंड
एथिरे जो एरर जो जहाँ भी देखो गोटे एरर हैंडलर द्वारा से गोटे एरर गुड़ी कंट्रोल हम एथिरे आम टोकेन्स हाव यूज टूल्स लाइक लेग्स आफ्टर दैट पार्स टी मीन्स ग्रामर ग्रामेटिकल पार्ट कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर मीन्स ग्रामेटिकल मीन्स प्रोग्रामिंग सिंटैक्स वाइज किसी ग्रामेटिक एरर मीन्स सिंटैक्स एरर मीन्स सेमिकोलन और अदर पार्ट्स रिलेटेड टू ग्रामर सेटा माने पूरा पूरी सेटा करेक्ट कलापर से कौन हम ना कंटेस्ट फ्री ग्रामर हम आफ्टर दैट वेरीफाइड सिमेंटिकली है से इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कन्वर्ट हम these are the whole part of the phases of compiler and 6 phases it when we want to convert high level language to source code to low level language, that is machine code, it requires 6 phases of the compiler. This is called phases of compiler. I think all of you understood. Thank you very much.